Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahira Akram. Welcome back to Autism Resource Group पाकिस्तान। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके अलावा एक मच नीडेड टॉपिक है। हम बहुत अरसे से बात करना चाह रहे थे टीनेज और एडल्टहुड पे स्पेक्ट्रम पे बच्चों के लिए। और आज का टॉपिक इसलिए भी स्पेशल है दैट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, Isma Khan. She is a BCBA from Karachi. Lots of people know her. Or before I get to Isma, I would like to confess one thing कि Isma indirectly मेरी बहुत सालों से टीचर हैं. It's been years I'm watching her videos and her channel, and all the learning of ABA जो मेरी initial हुई थी वो Isma की videos देख देख के हुई थी. During COVID times even I watch her videos a lot. So Assalamu alaikum Isma, and thank you so much and welcome to the group. Thank you so much for such a warm welcome, and I'm so happy to be here and looking forward to talking more. थैंक यू वेरी मच। इसमें आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? लाइक बीसीबीए आपके ज़हन में आया कैसे कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, और कब से कर रही हैं आप? अच्छा, तो मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं और मैं पाकिस्तान 5 साल से ऊपर से पहले वापस आई हूँ, तो 5 साल हो गए कराची में। इससे पहले मैं बाहर रहती थी। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ और मुझे ऑटिज्म मैंने सुना कैसे? जब मैं तकरीबन 10 साल की थी, तो मेरे चचा के बेटे को ऑटिज्म का डायग्नोसिस हुआ था और मैं खुद ही बहुत छोटी थी। वो तकरीबन 2-3 साल का था उस वक़्त। और मुझे याद है कि वो बात कर सकता था, वो बोलता था अंडा, पानी, मामा, मुझे ये सब याद है। और फिर अचानक से ये सारे लफ्ज़ चले गए थे और इसकी बिहेवियर शुरू हो गई थी, जैसे हैंड फ्लैपिंग, टिप-टो वॉकिंग, स्पीच चली गई थी। और इसको कहते हैं रिग्रेसिव ऑटिज़्म, जो काफ़ी क्लाइंट्स को जिनको मैं मिली हूँ, पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा ये करता था, वो करता था और फिर अब चला गया था। तो इसको कहते हैं रिग्रेसिव ऑटिज़्म। तो उनको देख के मैं इंस्पायर हो गई थी। और फिर, और बाय द वे, अगर आप ये वॉच करें, आप बिल्कुल एंड तक वॉच करें, बिकॉज़ मैंने अपने कज़िन को भी इसमें फीचर किया है। अब वो 21 इयर्स के हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं एन एक्चुअल एडल्ट विथ ऑटिज्म। खैर, सो देन आई गॉट इंटरेस्टेड इन द फील्ड। आई यूज्ड टू वर्क विथ हिम, प्ले विथ हिम, एंड आई ऑलवेज न्यू कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं इंटर्नशिप करती थी कराची में, मैंने प्रिजन में काम किया मर्डरर्स के साथ, मैंने कारवान हयात में मेंटल हेल्थ में काम किया बच्चों के साथ। मैंने सोचा नहीं, लॉन्ग टर्म में मुझे बच्चों के साथ काम करना है, क्योंकि बच्चों के साथ अलग मजा आता है और उनको फिक्स मोल्ड कर सकते हैं, जो एडल्ट्स के साथ ज्यादा मुश्किल है। तो फिर आई आफ्टर दैट परस्यूड साइकोलॉजी इन वॉरिक यूनिवर्सिटी यूके में। आई स्टडीड psychology for 3 years in my undergrad, and उसके बाद I literally stumbled across a job London में, एक स्कूल में, स्नोफ्लेक स्कूल। वहाँ मैंने काम किया था और मैंने रियलाइज किया कि ये काम मुझे बहुत पसंद है। हम वहाँ ABA थेरेपी करते थे, जिसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगी। और उस स्कूल में फिर हम ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चे होते थे, फ्रॉम द एज ऑफ 3 टिल द एज ऑफ 14, एंड वी यूज्ड टू वर्क विद देम। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बच्चों के साथ एक और लेवल पे कनेक्ट कर सकती हूँ, स्पेशली जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, मैं उनको समझ सकती थी। तो मैंने सोचा आई हैव टू डू दिस। देन आई वेंट टू दुबई। आई वर्कड एट द कार्बोन क्लिनिक, व्हिच इज लेड बाय डॉक्टर विंसेंट कार्बोन। ही इज वन ऑफ द leading experts in the field on autism. He's been in the field for 40 years and incredible. So his clinic is one of the best in the world. So I trained there. Then I pursued my master's in behavior analysis. मुझे फिर साथ साथ BCBA के बारे में पता चला मेरे कॉलीग से, तो मैंने देखा, फिर मैंने सोचा चलो मैं करती हूँ। फिर मैंने लंदन में जाके अपनी BCBA के एग्ज़ाम के लिए तैयारियां करके एग्ज़ाम दे दिया। और फिर मैंने सोचा, अब मैंने दुबई में काम कर लिया, मैंने लंदन में काम कर लिया, लेकिन मेरा दिल पाकिस्तान में था। और मैं पाकिस्तान में बड़ी भी नहीं हुई हूँ, मैं यहाँ सिर्फ 5-6 साल रही हूँ अपनी पूरी लाइफ में, बाकी बाहर ही था। और मेरी अम्मी अबू ने कहा बाहर रुक जा, वापस क्यों आना है? मैंने बोला नहीं, मैंने वापस आना है, क्योंकि इतनी ज़रूरत है। और जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी 5 साल के ऊपर पहले, तो मैं पहले BCBA थी जो पाकिस्तान में रहती थी। दूसरे भी BCBAs हैं जो आते जाते थे, लेकिन मैं पहली थी जो यहाँ रहती थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता से मैंने अपने घर से शुरू किया, एक क्लाइंट से शुरू किया। एक दिन में मैं 7 क्लाइंट्स पर करती थी, बैक टू बैक। एंड फ्रॉम देन टू नाउ I've opened eye care 3 years ago. I have a team. That's a little bit about my journey.
आई रिमेम्बर इसमें आपने कलरफुल सा मैट बिछाया होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक साइड पे आपका एक रैक था, वो आपके घर के सेशंस थे। जी, या बिल्कुल। वी आर एब्सो रियली ग्लैड कि आप इस फील्ड में हैं, बिकॉज़ जो शौक से काम करता है उनकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। इस्मा, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ कैन यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन? यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू। मैं शुरू करती हूँ। Okay, so this is now. Let me just share my screen with you. आपको नजर आ रहा है मेरा स्क्रीन? जी, आ रहा है। Brilliant. All right, so अब हम शुरू करते हैं. And now the topic for today, जिसके बारे में मैं बात करूंगी, is thinking about the bigger picture for teens and adults with autism. And अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये है टीन्स एडल्ट्स जिनको ऑटिज्म है, बेकिंग कर रही हैं, लॉन्ड्री कर रही हैं. तो आपको अब अंदाजा होगा मैं किन किन चीज़ों के बारे में आज बात करूंगी. दिस इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ऑलरेडी मैंने इंट्रोड्यूस वैसे कर लिया है. एज आई सेड, आई वेंट टू वॉर्क यूनिवर्सिटी, फिर मैंने अपना मास्टर्स एबीए में किया और फिर मैं बीसीबीए बन गई हूँ. मेरा करियर मेरा कज़न से मैं इंस्पायर हुई हूँ. फिर मैंने लंदन में काम किया, दुबई में, और उसके बाद मैंने अपना एक सेंटर खोला था, आई केयर, दिसंबर 2019 में, बिल्कुल कोविड से पहले. So that's I care in the bottom corner, and that's myself in my office. Okay, so today's topics that we're going to discuss are what is autism spectrum disorder, parent का role क्या है, what is the parents role and position in बच्चों की lives में, autism adolescence में कैसे होता है, autism young adults में कैसे होता है, बिगर पिक्चर का मतलब क्या था जब आपने पढ़ा था बिगर पिक्चर, इसके बारे में बताऊंगी, और किस तरह के लाइफ स्किल्स सिखानी चाहिए. So let's go ahead and start one by one. What is autism spectrum disorder? ASD stands for autism spectrum disorder, और ये एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है. अब इसमें जो मेन मसले होते हैं या मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है इन बच्चों को डायग्नोज करने के लिए, वो दो एरियाज को देखता है. सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, तो इट लुक्स एट how an individual socially communicates, talks, interacts, speaks to people, emotional understanding, awareness for relationships, all the social aspect of it. And then the दूसरा component है restrictive and repetitive behaviors. तो इनमें क्या होता है कि जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, इनके रिपेटिटिव बिहेवियर्स होते हैं. वो एक चीज़ बार बार करते हैं, एक गाना बार बार सुनते हैं, शायद हैंड फ्लैपिंग करें. इनकी सेंसिटिव बिहेवियर्स हो सकती हैं कि वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कोई आवाज़ों से कानों को फिर शायद बंद करेंगे, या वो हाइपो सेंसिटिव होंगे, कम सेंसिटिव होंगे. सो दे हैव वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स. मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगी. अब पहले मैंने कहना है, लाइक आई सेड, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन एंड इट इज अ स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम का ये मतलब है कि बच्चा सिवियर से लेके माइल्ड तक जा सकता है. बच्चा कहीं भी इस रंग बिरंगी स्पेक्ट्रम पे फॉल कर सकते हैं. तो सिवियर ऑटिज्म सिवियर ऑटिज्म में बच्चे होते हैं जिनके बहुत कम स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन कम होता है, और मॉडरेट होता है जो ज़्यादा सिवियर होती हैं, लेकिन फिर भी उनको इम्प्रूव किया जा सकता है. और हाई फंक्शनिंग या माइल्ड ऑटिज्म, अब ये मिक्स हो गई है माइल्ड और सिवियर, दे मेंट टू बी ऑन द ऑपोजिट एक्सट्रीम्स, माय बैड. एंड हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म इज माइल्ड केसेस. इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एस्पर्जर सिंड्रोम, लेकिन अब कहते हैं हाई फंक्शनिंग. सो इट्स लो फंक्शनिंग, मॉडरेट एंड हाई फंक्शनिंग. दैट इज हाउ द स्पेक्ट्रम वर्क्स. So what are the symptoms? As I said, lack of social and communication issues and repetitive and restricted behaviors. What does that mean? It means इन लोगों में, इन बच्चों में, इन इंडिविजुअल्स में, इनको लोगों की जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस में मुश्किल लगता है समझने में. कोई सार्कास्टिक हो रहा है, कोई उदास है, कोई गुस्सा है, इनको इस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में कम समझ है. फिर दूसरी चीज़ है फेल टू डेवलप योर रिलेशनशिप्स. डेवलपिंग रिलेशनशिप्स इनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि ये लोगों को पूरा पढ़ नहीं सकते, ये बहुत एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेते हैं. तो इनकी जो ईक्यू होती है वो काफ़ी लो होती है. लैंग्वेज डिले होती है, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स वीक होती हैं. कोई बच्चों की एकोलेलिया होती है, जैसे वो दे विल रिपीट रैंडमली थिंग्स दैट देव हर्ड.
तो मेरा एक बच्चा होता था और वो रैंडमली लाइंस बार-बार कहता था गानों से। तो मैं बात कर रही थी और फिर पेप्पा पिग के लाइनों से कहता था, "जॉर्ज एट हिज फूड", और रैंडमली लव्स और सेंटेंसेस बोलता था, वीडियोज़ जो उसने पहले देखी थी। सो दैट्स कॉल्ड एकोलेलिया, जो काफ़ी बच्चों में है जो ऑटिस्टिक होते हैं। लैक ऑफ उनके प्ले स्किल्स वीक होते हैं, लैक ऑफ फंक्शनल प्ले स्किल्स होती हैं। तो ये है पहला डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। दूसरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपेटिटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। इसका ये मतलब है, ये काफ़ी रिजिड होते हैं, इनकी रूटीन्स पसंद है, इनको स्पेसिफिक लोग पसंद हैं, इनको स्पेसिफिक कमरे पसंद हैं, इनकी ऑब्सेशंस होती हैं, स्पेसिफिक गाने बार बार सुनते हैं। टो वॉकिंग हो सकती है, हैंड फ्लैपिंग हो सकती है, विजुअली आंखों के कोनों से देखना, चीज़ों को सूंघना, चीज़ों को मुंह में डालना, टच करना। एक बच्चा है मेरे पास, वो बार बार जब भी अपनी अम्मी के साथ होता है तो सोने के वक्त बार बार उसको स्क्रैच करता है बाजू पे और नेक पे, ताकि उसको वो टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिलता है। तो इनकी सेंसरी नीड्स काफ़ी होती हैं। अब ऑटिज्म का प्रेवलेंस क्या है? अब ये है स्कैरी पार्ट। ऑटिज्म करंटली अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल व्हिच इज, अब मेरे जो काफ़ी ज़्यादा स्टैट्स मैं इस्तेमाल करूंगी हमारे आज के प्रेजेंटेशन में, वो होंगे बेस्ड ऑन अमेरिका स्टेटिस्टिक्स, नॉट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान की जो स्टैट्स हैं वो इनएक्यूरेट हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, और फ़ायदा नहीं है कि मैं नंबर्स आपको दूंगी एंड दे नॉट एक्यूरेट। So I've gone with the America stats just to give you an idea of how things work in general. So currently it's 1 in 44. So over the past few years, autism used to be 1 in 63, 1 in 52. Now it's 1 in 44. फिर कहेंगे शायद 1 in 32 हो जाएगा. So it's really increasing. And it's more common in boys, 4 times more common in boys. So ज़्यादा boys, अब मेरे क्लिनिक में 2-3 लड़कियां हैं, बाकी लड़के ही हैं ज़्यादातर. And it doesn't matter what race you are, what socio-economic background you are, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी को भी हो सकता है. और जो टीन्स होती हैं, जो ज़्यादा सिवियर केसेस होती हैं, उनको पहले से डायग्नोसिस हो चुकी होती है बिकॉज उनकी सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन जो टीनेजर्स जो माइल्ड केसेस होती हैं, उनकी डायग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती हैं बिकॉज शुरू में उनकी सिम्टम्स नज़र ही नहीं आती। और मैंने एक चीज़ ऐड करना है कि अगर आपको लगता है आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे जो व्यूअर्स हैं सबके टीनेजर्स तो नहीं है, किसी के लोग छोटे भी बच्चे हैं और आपको शक है, देन यू नीड टू रिमेंबर दैट बिफोर 3 जनरली डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज you do not get an accurate picture of what the actual issue is, and you need to allow time to show those symptoms. Regardless, therapy karani chahiye from the start, from the beginning, because if you do therapy, early intervention is key, which is what we do, because the quicker you jump in, the sooner you can fix the problems. So these are just some famous adults who have autism that I wanted to highlight. That is Susan Boyle, she's a singer. That is Bill Gates, Einstein. This is the pop artist Andy Warhol. And then अगर आपने वो डॉक्टर्स का शो देखा है नेटफ्लिक्स में, this boy he plays the role of an autistic child. और अगर आपने देखा नहीं, डॉक्टर, वो शो का नाम है मैं भूल रही हूँ, लेकिन इट्स समथिंग डॉक्टर, एंड The उसमें Good ये Doctor. द गुड डॉक्टर, बिल्कुल। Yeah. और उसमें ये जो लड़का है, he played the role of an adult with autism extremely well. So it's very useful to watch this show if you want to understand more. Moving forward, your role as a parent, very, very crucial. ओके, सो पेरेंट्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन बच्चों के साथ, बिकॉज देखें बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा थेरेपी जाता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, बाकी घंटे किसके साथ होते हैं? पेरेंट्स के साथ होते हैं, केयर टेकर्स के साथ होते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि आप अपने बच्चे को कैसे संभाल सकते हैं। सो पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज चिल्ड्रन ग्रो अप एंड दे गेट ओल्डर। पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, होप्स होती हैं, ड्रीम्स होती हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, जो ऑटिस्टिक होते हैं, और पेरेंट्स को फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ जाता है कि अच्छा मेरा बच्चा ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो डिसअपॉइंट हो जाती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज टेक योर चाइल्ड फॉर वट एवर देयर स्किल्स आर, बेस्ड ऑन वट लेवल दे आर एट, वर्क एट देयर लेवल, नॉट बेस्ड ऑन मेरा बच्चा तो 5 साल का हो गया, इसको स्कूल जाना चाहिए। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, बच्चे की नहीं है। बच्चा तो स्कूल के लिए तैयार भी नहीं है। तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, first look at your child and then manage your expectations. Don't put your expectations on your child because that's not fair.
they, because in the end you know better than them, so you have to work on your child to help them develop their skills and come to a level that they need to be at. एंड जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कोई रिकवरी हो, कोई क्योर हो, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती ऑटिज्म में. देयर इज नो क्योर, देयर इज नो क्विक फिक्स. ये जो डाइट्स होती है और ये सारी चीज़ें, इनकी एविडेंस ज़्यादा नहीं है, दे आर नॉट फुली प्रूवन टू बी इफेक्टिव. ऑफ कोर्स आपका बच्चा अगर ग्लूटेन फ्री खाता है बिकॉज वो इंटॉलरेंट है ग्लूटेन से, तो फिर ठीक है, डाइट करनी चाहिए, वरना नॉर्मल डाइट करनी चाहिए. ठीक है, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, कम चीनी शुगर की चीज़ें दे, फ्रूट ये वो सारा, बट you want to make sure the diet is also as normal as possible. You also as a parent want to balance how much you and how you accept your child the way they are. You also want to forgive yourself. कभी कभार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो रोते हैं, कहते हैं मैंने अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दिया था जब ये छोटे होते थे और फिर ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे. ना ऐसे देखिए, ठीक है, वो हो गया जो हो गया. नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. बी जेंटल ऑन योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारे पेरेंट्स वांट द बेस्ट फॉर देयर किड्स. कभी कभार वी डोंट डू मेक द बेस्ट डिसीजंस, इट्स ओके, वक्त के साथ बंदा सीखता है. एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पेरेंट्स टू बी इन्वॉल्व जितना भी हो सकता है. एंड एक चीज मैंने हाईलाइट करना था कि अगर दो पेरेंट्स काम करते हैं और अगर उनके पास एक बच्चा आता है जो ऑटिस्टिक होता है, एक पेरेंट को अपनी करियर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. ये बहुत से लोग नहीं समझते. दोनों काम करते हैं, हेल्प के ऊपर छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि इस बच्चा को कुछ होएगा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या. नहीं, the parents have to feed the child, teach the child, because they are the best therapists that there can be for children. और जितने बड़े बच्चे होते हैं और ज़्यादातर जो मेल्स होती हैं वो बड़े होके कभी कभार एग्रेसिव होती हैं अपनी टीनेज फेजेस में, हार्मोनल चेंजेस जिसके बारे में बाद में बात करूंगी. एंड अ मैन फिगर इज ऑफन रिक्वायर्ड बिकॉज कभी कभार औरत से मैनेज नहीं हो सकता. So it's important that both parents are involved in their child's life. And the goal as a parent should be to help your child be as independent as possible to live a fulfilling life. So, just a couple of tips for parents. You need to be more patient with your child. You need to ensure your child has structure, even if they're teenagers. बड़े होते जाते हैं फिर भी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, फिर भी एक रूटीन होनी चाहिए, फिर भी उनकी सूदिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए. प्रिपेयर फॉर ट्रांजिशंस. अगर वो स्कूल शुरू करें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए. अगर वो फिर कोई एडल्टहुड में एंटर करें आपको ट्रांजिशनिंग में प्रिपेयर करना चाहिए. आई टॉक मोर इन दिस डिटेल्स. फॉलो योर चाइल्ड्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स. जितने बड़े बच्चे होते जाते हैं उनकी प्रेफरेंसेस आना शुरू होती हैं. पहले आपका बच्चा शायद वही कपड़े पहनता था जो आप पहनाती थी, अब उनको नहीं वो पहना, अब उनको जीन्स नहीं पहनना, अब उनको सिर्फ शॉर्ट्स पहनना है. इट्स ओके. कभी कभार यू कैन फॉलो योर चाइल्ड्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स. फूड आप वही खिलाएंगे जो आपको ही खिलाना है, लेकिन जितना, but remember as your children get older you need to follow more of what they want as well. Not everything is your way. I've said pick your battles. Don't make everything a battle कि बस आपने ये करना है तो आप ये खाओगे, आपने ये कपड़े पहनने, आपने अभी उठना, आपने ये. नो, कभी कभार इन बच्चों के साथ आपने फ्लेक्सिबल होना होगा, आपने चॉइसेस देनी होंगी, आपको ये खाना है या ये खाना है, आपको यहाँ जाना है या वहां जाना है, ये भी करना चाहिए. वरना आप फिर हर चीज पे लड़ेंगे तो आपका बच्चा आपसे दूर हट जाएगा. तो ये आपको सोचना चाहिए. एंड कभी कभार जब टीनेजर्स बड़े होते हैं तो दे ऑल्सो स्टार्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स, एंड वील टॉक मोर अबाउट दैट. एंड यू वांट टू बी मोर टॉलरेंट टू गिविंग देम देयर स्पेस. Just a few more things to consider as a parent. It's important that you instill hygiene habit, instill independently teaching your child hygienic habits. Showering, clean clothes, hand washing, उनका एक regular bedtime आपको रखना चाहिए. And for children who are entering their puberty and teenagers, they don't understand these changes that happen in their body and social interactions, how to be close to a woman or close to a man and distance or ये वो. These are things you need to work on with your child. जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, कंपेयर टू न्यूरोटिपिकल बच्चे चीजें जल्दी सीख जाते हैं. ऑटिस्टिक बच्चे आपने हर चीज उनको सिखाना होता है. वो स्पंज की तरह होते हैं. जितना आप सिखाएंगे उतना वो अब्सॉर्ब करेंगे, जितना कम आप सिखाएंगे उतना कम वो अब्सॉर्ब करेंगे. So if you want your child to reach their full potential, you need to feed them with all the knowledge and skills that you can so they can absorb it like a sponge. And always evaluate आपका बच्चा डेवलपमेंटली कहाँ है. आप खामखा आगे वाले गोल्स ना सेट करें अगर वो बच्चे के पास बेसिक स्किल्स नहीं है. Always go with what your child is developmentally, not where दूसरे बच्चे उनके एज
कि कहाँ हैं, आपने अपने बच्चे के लेवल को देख के उनके लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स सिखानी होंगी. Okay, so just as I highlighted also earlier कि कभी कभार पेरेंट्स सोचते हैं कि जब बच्चा टीनेजर हो जाता है या बड़ा हो जाता है और बच्चे सर्टेन स्किल्स नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स सोचते हैं इफ ही hasn't gotten it now he will never get it. अगर वो बच्चा अभी तक ये सीखा नहीं है तो इसे कभी नहीं सीख सकेगा. ये काफी चलता है, ये लाइन पेरेंट्स सोचते हैं. ये लाइन आपको भूलना चाहिए, बिकॉज अगर आप गिव अप करेंगे एंड यू लूज होप, who is going to have hope in your child? The human brain is pliable, it's flexible, you can change, turn, teach skills. So remember, अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस, आपका बच्चा आपके एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रहा, आपको नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं कर सकता. आप फिर सोचिए अच्छा ये नहीं कर सकता तो फिर मैं क्या करूं ताकि वो सीख सके, मैं अपनी टीचिंग स्टाइल में क्या फिक्स करूं ताकि मेरा बच्चा सीखे. यू नीड टू गो इनटू देयर वर्ल्ड एज अ पेरेंट. Don't expect them to come into your world. That is the most important thing. And that is why I got into this field, because I realized मैं इनकी world में चली जाती हूँ तो मैं इनको समझ सकती हूँ. इस वजह से बच्चे मेरे से बहुत respond करते हैं. So remember, go into their world, teach them things the way they understand, not the way you understand. Little things like मैं एक काम करती थी एक जगह में और वो थेरेपिस्ट बच्चे को एक स्किल सिखाती थी, बॉल फेंकना. अब बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स वीक थी, ठीक है, और वो एक छोटे से बॉल से कैच थ्रोइंग सिखा रही थी और बच्चा नहीं कर सक रहा था. तो मैंने बोला देखिए आप इसको एक बड़े बॉल से कराएं, ताकि क्योंकि इसकी फाइन मोटर स्किल्स वीक हैं तो बड़े बॉल में इसका बेहतर ग्रिप आएगा. और उसने बिल्कुल अच्छी तरह फेंका, तकरीबन बास्केटबॉल की नेट के करीब, जो छोटे बच्चों की बास्केटबॉल नेट्स होती हैं. सो यू नीड टू चेंज हाउ यू टीच द चाइल्ड डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल सेट. So, and just remember, for the betterment of your child, it's not just only as a parent. Parents की भी बहुत बहुत वो important role होती है, लेकिन it's also a collaborative approach with the therapist, speech therapist, school teachers, instructional assistants, resource teachers, etc. So it requires a village to really bring up these children for all the support you need. So आज की जो टॉपिक की फोकस है, it is on teens and adults with autism. So now we're going to go into the real topic that was meant to be discussed today. Right, ASD, autism in adolescence. So first let's define age groups. What does this mean? Infants are children between 0 to 1. Babies are 0 to 2 years old. Children are 3 to 16 years old. Adolescents or teenagers are 10 to 19 years old. Young adults are 17 to 30 years old. Middle-aged adults are 31 to 45. आप पढ़ के देख सकते हैं. So today we're going to be talking about adolescent teenagers and young adults. ये हमारी आज की फोकस होगी. अब जब मैं तैयार करी थी ये प्रेजेंटेशन और मैं रिसर्च करी थी, इतना इंफॉर्मेशन आ रहा था इन टॉपिक्स, जैसे ब्रॉड इंफॉर्मेशन, लेकिन जब मैं रिसर्च ढूंढ रही थी एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स में ऑटिज्म के बारे में, बहुत कम रिसर्च हो चुका है. इस वजह से स्टैट्स भी कम आती हैं. तो यंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, इन्फेंट्स चिल्ड्रन में बहुत रिसर्च निकला है, लेकिन इनके ऊपर बहुत कम है. खैर, जो भी मुझे मिल सका, जो भी मुझे लगा आज के लिए अप्रोप्रिएट होगा, मैं वो निकाल के इस पावर पॉइंट में डाल चुकी हूँ. आई होप यू फाइंड इट बेनिफिशियल. So let's talk about adolescence. Adolescence is the most vulnerable time for your child because they're having so many transitions. They're hitting puberty, उनकी mood swings होती हैं. Children with severe autism often do not understand कि उनके अंडरआर्म्स में बाल क्यों आ रहे हैं, आदमियों के मुंह के बाल आ रहे हैं, उनकी वॉइस चेंज हो रही है. And interestingly, children with autism, as they approach puberty, there is an increase in likelihood for seizures and epilepsy. So that is something I wanted to point out. मेरे जो cousin हैं जो अभी 21 years के हैं, 22 years के हैं, he also developed epilepsy later on after he had puberty. So it's just something I wanted you to be mindful of. So another thing to keep in mind is when teenagers who have autism, they also often end up developing mental health disorders. So autism is already a complex disability, but it's harder to diagnose the mental health disorders. Lekin there are certain mental health disorders which are very much prominent in individuals with autism, which include anxiety, ADHD, OCD, depression. So we'll talk about these in more detail.
So let's talk about comorbid mental health disorders. The first one was anxiety. 1 in 3 individuals with autism, so these are all, by the way, teenage statistics, teenagers ka. 1 in 3 individuals with autism, teenagers with autism, have anxiety. 44% have phobias. 29% को सोशल एंजाइटी होता है, 13% को जनरल एंजाइटी होती है, 10% को पैनिक डिसऑर्डर्स होती हैं. सो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म 33% चांस कि उनको एंजाइटी इश्यूज भी होती हैं. देन टॉकिंग अबाउट ADHD, 50 to 70% of individuals with autism have ADHD. तो इनकी बहुत ओवरलैप होती है. Other mental health disorders in teenage years is OCD. Very common in OCD is very common in individuals. 17 to 37% have OCD. What is OCD? OCD means obsessiveness, compulsive behaviors. एक चीज बार बार करना, एक चीज एक ही तरीके में होना. And already autistic individuals की repetitive behaviors होती हैं. So then with OCD it becomes heightened, ज़्यादा होता है. So it's harder to change these habits. And actually, and this was very interesting. Many teenagers with autism also often tend to develop depression. So 26% of the people with autism have depression. And that is because जब teenagers बड़े हो चुके हैं ना, and they let's say are in school environment, जो ज़्यादा mild cases होते हैं, जो बात कर सकते हैं, जो communicate कर सकते हैं, they realize they are different to their peers because now they're older, they're more aware of their surroundings, and then they feel like they won't fit in and people don't understand them, and that is why they can go into depression. So some of the symptoms of depression are irritability, concentration कम है, socially withdraw होना, appetite कम या ज़्यादा होना, sleep disturbances. So I'm only pointing all these things out because हमने autism के बारे में तो काफ़ी सुन लिया, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं और भी मसले आ सकते हैं. So I want you to be prepared and ready for these things. So let's talk a little bit about puberty, which occurs during adolescence. So let's move forward. Hitting puberty. This area is very under researched in autism, in the field of autism, as I said, this age group में specifically. And जो बच्चे autistic होते हैं and they're hitting puberty, they find it hard to read like body language. They don't understand signals. They don't understand certain symptoms that are happening in their body. Their bodies are changing. Their brain structures are changing. Girls have periods. They don't know that, वो blood आता है, इसका क्या मतलब है, वो घबरा जाते हैं. Boys often develop sexual feelings. In fact, even girls do. And they learn that they have pleasure zones. And in fact, I know ये पाकिस्तान है, लेकिन मैं फिर भी highlight करूँगी क्योंकि मैंने ये सीखा था बाहर जब मैं रहती थी कि जो बच्चे होते हैं जिनकी obviously sexual needs भी होती हैं, it's very important, especially for boys, to teach them how to masturbate. And that is the role of a father to do for their son. Because otherwise, if you don't, मैंने ये देखा था जब मैं बाहर रहती थी, कि their hormones are so heightened that they don't have a release. So they end up being extremely aggressive. एक बच्चा होता था used to jump and throw and bite, and they're big, so they're harder to control. So his father had to teach him this release mechanism, and that really helped him when he was hitting puberty. So this is something very important for you to remember. Many girls develop eating disorders. Many children with autism already have sensory issues, but then they have image issues. They don't understand why is their body becoming a certain way. They could develop eating issues, but again, limited research on this. I looked a lot into eating disorders, लेकिन बहुत कम information था to understand it. जो मुझे मिला था मैंने आज bring up किया था. 13% of children with autism have epilepsy, but when they hit puberty, it increases to 26%. So 1 in 4 develop epilepsy. Seizures can cause language difficulties, motor problems, they can regress as well. And then other symptoms of puberty are outbursts. They're more extreme, they're more aggressive. You'll notice अभी मैं बच्चों को देख चुकी हूँ जो puberty में जा रहे हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा, उनको stimulation नीचे मिल रहा है. जो लड़के होते हैं, मेरे क्लिनिक में भी होता है, तो वो टेबल को पकड़ के वो they rub against it, या अपने थेरेपिस्ट के टांग के ऊपर करते हैं, या मेरा जो छोटा कजिन होता था उसको समझ नहीं आता था तो वो पिलो को नीचे ज़मीन पे रख के रॉक करता था. So you want to address these things with time. I mean, there's a lot more detail, but I'm just touching on the surface of it. Now I'll talk a little bit about adults, young adults with autism.
So young adults was between 70 to 30 years old. Young adults generally have a high rate of unemployment. Many often don't end up working, particularly place like Pakistan, जहाँ बहुत कम लोग इनको हायर करते हैं बिकॉज इनको समझ नहीं आता कि ये क्या काम कर सकते हैं। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि ये लोग अगर आप सिखाएंगे तो इनको वोकेशनल स्किल्स पे आप लाएंगे तो ये काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। श्योर एक टिपिकल ऑफिस एनवायरनमेंट में तो नहीं शायद, लेकिन डिपेंडिंग ऑन वेयर दे ऑन द स्पेक्ट्रम अगर माइल्ड हो तो कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं। लेकिन अगर वो थोड़े मॉडरेट हैं देन दे कैन स्टिल डेवलप स्किल्स व्हिच आई विल टॉक अबाउट व्हिच कैन हेल्प देम वर्क इन टू एन एक्सटेंट। Majority of the adults with autism continue to live with family members or relatives. 40% of the adults often don't have friends or don't spend time with friends. They have other health conditions. They're dependent on their parents generally. And when they're transitioning from adolescence to adulthood, they're very vulnerable because they're getting older, they're getting more aware of their surroundings. But of course, as I said, there's little research about this, but we'll talk a little bit more about what you could do with an adult with autism. So this was a stat in America. 10% of individuals with ASD were employed and 90% were unemployed. And this obviously depends on where the individuals are on the spectrum. So high functioning, jo mild cases, and those are the ones who are employed generally. And in terms of their quality of life, again, this is America stats, but just to give you an idea of how it kind of works. So 39% don't see friends, 53% are no longer invited to social activities with friends, 67% could be victims of abuse. And then often when students finish school, because not all individuals with autism go to school, but कोई बच्चे होते हैं जो school चले जाते हैं, and often high school के बाद they often don't pursue college and university. But there are kids who can, if they're mild and they've been worked and their skills have been developed to be at that level. And generally जो autistic adults होती हैं, they often need, so 87% of adults with autism live with their parents, although, and they say 22% don't want to live there, but I'm not sure what that meant. But generally, my point is that as a child becomes older, adolescence to adulthood, we have to be realistic. Will they be independent? Will they not? अकेले रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। अगर हम नहीं हैं, इनका ख्याल कौन करेगा? ये सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा। अगर उनके पास सिबलिंग है, तो सिबलिंग को छोटे एज से सिखाना पड़ेगा कि आपने अपने भाई या बहन को संभालना होगा अगर हम नहीं होंगे। ये चीज़ें आपको अपने दूसरे बच्चों को भी आहिस्ता-आहिस्ता समझाना होगा। Now, bigger picture. What did bigger picture mean? Bigger picture means if we focus on the little skills, मेरा बच्चा ABC करता है, कर नहीं सकता, मेरा बच्चा राइटिंग नहीं कर सकता, मेरा बच्चा 1 2 3 नहीं कर सकता। अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप बड़ा तस्वीर भूल जाएँगे। You want to look at the bigger picture. What does the bigger picture mean? It means अगर आप अपने बच्चे को देखते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं, आपने देखना है कि what exactly, where do you see them in their life? Do you see them living alone? Do you see them living by themselves? Do you see them talking? Do you see them communicating? Can they do independent life skills, hand washing, toilet training, अपने कपड़े चूज करके पहनना, शावर करना, खाना पकाना, अम्मी को हाउस चोर्स में हेल्प करना, मनी मैनेजमेंट। यू वांट टू सी दीज थिंग्स। ये छोटे छोटे डिटेल्स पे हम जो अटक जाते हैं ना, इनका कोई फायदा नहीं होता। थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर। मैं इस बच्चे से लाइफ में क्या चाहती हूँ, इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है। डज इट मैटर अगर वो स्कूल जा रहा है उसको A+ नहीं मिल रहा और एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा है? नो, it doesn't matter, because you need to realize what's more important is, do they have basic communication? Can they tell you what they want? I mean, even communication is another huge topic that I would love to talk about, because there are different communications: sign language, PECS, picture exchange communication, vocal, बात करना, फिर ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स। प्रोलोको एक ऐप होता है जो तस्वीर में नजर आ रहा है कि बच्चा ऐप से कम्युनिकेट कर रहा है। देखिए इसने लिखा है, can I have my iPod please? So by selecting photos, he made a sentence to communicate. Not all children will end up vocal. कोई बच्चे होंगे जो कभी बोलेंगे भी नहीं, उनके लिए भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। इस पे आपको फोकस करना चाहिए। योर बिगेस्ट गोल शुड बी, मेरा बच्चा अपने नीड्स कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। बाकी चीजें बाद में आ सकती हैं, बिकॉज अगर वो अपने बेसिक नीड्स नहीं कम्युनिकेट कर सकता तो फिर communication is as important as having water, sleeping, eating. Communication is just as important. अगर आपके बच्चे के weak fine motor skills हैं, वो नहीं writing कर सकता,
ठीक है, उनको टाइपिंग पिला दें, टाइपिंग सिखा दें, डजंट मैटर. Teach alternative ways to get your child to learn. If your child doesn't understand, आप complicated addition subtraction करें, teach basic addition subtraction with money. उनको रुपीस के नोट्स दिखा दें, 10, 20, 50, 100. फिर उनको दिखाएं कि जैसे लेस की चिप्स की पैकेट 20 रुपीज़ की आती है, सो दे सी 20 एंड दे सी 20 की नोट एंड दे गिव 20 एंड दे लर्न टू मैनेज मनी. इस तरह की स्किल्स आपको सिखानी चाहिए in the bigger picture. Independent skills. What is the ultimate goal? Can they live in the real world? That is what you need to think about. So, now going on to the most important final part of my discussion today, which is life skills. What does this mean? What are we looking at? So, in life skills, we're looking to teach our child independent living skills. Independent living skills means activities of daily living, which I'll talk about later. But before we can teach our child life skills, we need to see इनकी फाइन मोटर स्किल्स कैसी हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स कैसी हैं, इनकी इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एबिलिटी कैसे है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, विजुअल लर्नर्स हैं या नहीं. ऑटिस्टिक बच्चे विजुअल लर्नर्स ज़्यादातर होते हैं. अगर वो कोई कोई चीज़ समझ नहीं सकते, आप विजुअली उनको सिखा सकते हैं. कॉन्वर्सेशनल स्किल्स. सो यू वांट टू लुक इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मुझे एक सेकंड दे, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ. सॉरी. अच्छा, सो नाउ वी टॉक अबाउट कौन से स्किल्स हमको सिखानी चाहिए. सो द स्किल्स दैट वी शुड बी वर्किंग ऑन ज्यादातर आर द skills should be to make your child as independent as possible. This is what I meant by the bigger picture. You know, it's so interesting. जब मैं रिसर्च करी थी, मैंने एक चीज नोट किया था कि over 70% of children with autism, when they reach teen years, they cannot do independent life skills. Because parents को आदत हो जाती है ना कि मुझे समझ आ रहा है बच्चे को क्या चाहिए, तो मैं बस कर ही देती हूँ, मैं दे ही देती हूँ. क्यों? बच्चे को सिखाएं, फ्रिज खोले, खाना निकाले डब्बे से, प्लेट में डालें, माइक्रोवेव में डालें. आप इनको ही लेजी बनाएंगे. तो अगर आप इनके लिए हर चीज करेंगे तो ये कभी खुद ही नहीं सीख पाएंगे. Always think when you're working with your child, how can I make them independent? Everything is a teaching opportunity. Everything. टिश्यू में डस्टबिन, टिश्यू को डस्टबिन में फेंको, टिश्यू को डस्टबिन में फेंको, ये स्किल सिखाएं कि उनसे उठवा के फेंके. ड्रेसिंग स्किल्स, बटनिंग स्किल्स, कुकिंग स्किल्स, सैंडविचेस कैसे बनाते हैं, फ्रिज खोलो, ब्रेड निकालो, नाइफ निकालो. अगर आप बर्तन धो चुके हैं, आप अपने बच्चे से या जो ऑटिस्टिक है उनको जब वो सूख जाते हैं उनको कबर्ड में रखवाएं. फॉक्स को फॉक्स के साथ, स्पून को स्पून के साथ. सॉर्टिंग की स्किल ये होती है, और ये विजुअल होते हैं ना, तो ये विजुअल स्किल्स बहुत अच्छी तरह करते हैं. सॉर्टिंग, कपड़े धो दिए, बिस्तर पे रख दिए, शर्ट, अंडरवेयर टू सॉक्स. बच्चे से आप करवाएं कि सॉक्स को सॉक्स के ड्रॉर में रखें, शर्ट को शर्ट. आप ना करें, आप उनकी लॉन्ड्री ना रखें, उनको करने दें ना. अगर वो आप दुकान जा रहे हैं, आप उनको शॉपिंग स्किल्स करा सकते हैं, जो मैं आपको बाद में तस्वीर दिखाऊंगी. एक लिस्ट बनाएं जो जो चीज़ें इनको उठानी चाहिए, आप उनकी तस्वीरें प्रिंट करके रखें और बोले अच्छा शैम्पू लाओ, सोप लाओ, ये लाओ, वो लाओ. शॉपिंग सिखाएं. मनी मैनेजमेंट जो मैंने पहले हाईलाइट किया, बिस्तर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप कराएं. पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ लेकिन हमारे घर में हेल्प है, वो करते हैं. क्यों? इनको सिखाएं. बिकॉज वैसे भी ये बच्चे, कोई बच्चे हैं तो आगे काम तो शायद नहीं करेंगे, घर पे ही ज़्यादातर होंगे. तो अगर घर पे हैं तो घर के काम तो आप सिखा सकते हैं. बेकिंग करा लें. इन बच्चों की इन इंडिविजुअल्स की बहुत स्किल्स भी होती हैं. बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट यू कैन डेवलप देयर स्किल्स. अगर आपके बच्चे को नंबर्स बहुत अच्छी तरह समझ आते हैं तो आप इससे एक स्किल डेवलप कर सकते हैं. अगर आपके बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स और उनको पेंटिंग पसंद है, आप उनको पेंटिंग करा के पेंटिंग्स बेच सकते हैं. अगर आपके बच्चे को खाना पसंद है और वो पढ़ सकते हैं, उनको रेसिपीज पढ़वा के चीज़ें बनवा सकते हैं. इनसे इतनी चीज़ें आप काम करा सकते हैं. बट रिमेंबर, जितना आप इनसे करवाएंगे और इनको खुद ही करने देंगे, उतना ही ये कर पाएंगे. जितना आप इनको बेबी बनाएंगे उतना ही वो बेबी रहेंगे.
So you are the main avenue to develop their skills. Can they write emails? The more advanced individuals with ASD, अगर कोई बच्चे होते हैं जो मेडिसिन लेते हैं वो अपने मेडिसिन मैनेज कर सकते हैं एडल्टहुड में, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है वैसे. So if you're watching, I would recommend taking a quick picture of this because it's worth understanding these skills. Moving forward, so how can you even teach these life skills? ये आपका क्वेश्चन होगा, हम सिखाएंगे कैसे? You can use visual pictures. These are visual stories where they show step by step क्या करना चाहिए. You can use video modeling. वीडियो बना लें, आप एक वीडियो अपने आप बना लें, आप कर रहे हैं वो स्किल और फिर आप बच्चे के लिए प्ले करें तो वो आपको देख के कॉपी करें. सो विजुअल इमिटेशन. देन यू कैन हैव, अगर आपका बच्चा पढ़ सकता है, डिपेंडिंग अगेन ऑन वेयर दे आर इन द स्पेक्ट्रम, दे कैन हैव अ चेकलिस्ट. चेकलिस्ट आर वेरी गुड. मैं उठ के आऊँ, टिक कर लिया, मैंने वर्कआउट क्लोज डालने, टिक कर लिया, ब्रेकफास्ट खा लिया, क्लीन अप कर लिया, बेड बना लिया, ब्रश टीथ कर लिया. मेक देम टिक व्हाट दे डू. दे लाइक स्ट्रक्चर, दे लाइक रूटीन. विजुअल स्केड्यूल्स इस्तेमाल कर लें कि जब उन्होंने एक एक्टिविटी कर लिया वो बोर्ड से उतार के नीचे के डब्बे में डाल देंगे. सो दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्ट एंड फिनिश. For children who are visual learners, you can make them look at recipes, get bowl and fork. तो वो कबर्ड में जाके बोल उठा लेंगे, फोर्क उठा लेंगे, पानी उठा लेंगे, मैकरोनी और मैकरोनी चीज बना लेंगे. इस तरह से आप इनसे रेसिपीज भी करा सकते हैं. वेरी वेरी फन वे टू एंगेज देम. Some questions you can ask yourself about daily life skills. Can my child make his own bed? Can he do household tasks? Can he repair things? Obviously for adults, bulb change कर सकते हैं, laundry कर सकते हैं, washing, bathing, grooming, brushing teeth, toilet training, अपने पूरा मील खाना, अंडे बनाना, प्लेट से खाना, कप से पीना, टेबल को ले कैसे करते हैं, प्लेट आता है, फोर्क आता है, ये छोटे छोटे स्किल्स ये सीख सकते हैं. एंड एक्चुअली दिस इज अ रिसोर्स जो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं. इट्स कॉल्ड एसेंशियल्स फॉर लिविंग स्किल्स एंड इट्स वेरियस लाइफ स्किल्स दैट यू कैन टीच योर चाइल्ड. And it's designed by Patrick McGreevy and he has many books on life skills. तो अगर आप कुछ रिसोर्स खरीदना चाहें आप ये खरीद भी सकते हैं. इसमें बहुत मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं एंड दे वर्क ऑन डेली लिविंग स्किल्स. सो उसी किताब में से ये एक तस्वीर है ग्रूमिंग के ऊपर. ग्रूमिंग के ऊपर आप टास्क नेम लिखा है ऑन द लेफ्ट. यूजेस बाथरूम मिरर, क्लीन्स आई ग्लासेस और सन ग्लासेस, पैक्स टॉयलेटरी बैग, shaves legs, applies makeup, removes makeup. These are all adult-like skills you can teach your child. Then toileting, changes toilet paper roll when empty, cleans urine that missed the toilet, बाहर पीपी निकल गया साफ करना, restroom signs पहचानना, male, female, identify अगर bathroom vacant है, busy है, लाल है या green है, कोई अंदर है या कोई अंदर नहीं है, chooses appropriate stall, अगर वो पॉट चाहिए या वो दूसरा बाथरूम चाहिए. These are life skills. आप छोटी छोटी चीजें आप ऑटोमेटिकली अपने बच्चे को जब मॉल लेके जाएंगे तब फौरन उनको बाथरूम ले जाएंगे. उनको सिखाएं, गर्ल बॉय और गर्ल वी गो टू द गर्ल्स टॉयलेट. इस तरह से सिखाना चाहिए. And other vocational skills you can teach them. Vocational skills are basically practical skills that they can even use in a job and in a setting where they can use those skills. So for example, अब ये कैफे मलेशिया में खुला था. इट्स एन ऑटिज्म कैफे और ये सारे लोग ऑटिस्टिक हैं और इनकी काफ़ी प्री रेक्विजिट स्किल्स हैं कि ये अपने वोकेशनल स्किल्स डेवलप करके इन्होंने डिश वॉशर का बारे में सीखा, कॉफ़ी बनाना सीखा और ये इकट्ठे टोस्टी मेकर में डालना. So these are certain skills they used in their daily life and they put it in a work environment. So vocational training bridges the gap between the autistic community and the working world. And actually मैंने ये कहना था कि कराची में there's the Karachi Vocational Training Center जो आपको वहाँ भी टाइपिंग और थ्रेडिंग और मुख्तलिफ स्किल्स सिखाते हैं. तो अगर आपका बच्चा बड़ा है आप वो चेक आउट कर सकते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देयर सच फ्यू प्लेसेस दैट वर्क विद एडल्ट्स. सो frankly speaking आपको खुद ही काफ़ी स्किल्स घर पे ही सिखाने होंगी. So that is basically all I have to say today on autism, teenagers, young adults, life skills, bigger picture, what is important. Can my child tell me what they want? Where are their communication abilities? Can they basically communicate their needs?
That is the bigger picture. Don't get held on to the little details of मेरा बच्चा हर दफा आई कांटेक्ट नहीं देता, मेरा बच्चा हर दफा नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, मेरा बच्चा वो नहीं कर सकता. आप सोचिए मेरा बच्चा क्या क्या कर सकता है, और उससे उस स्किल से लेके आप आगे स्किल्स डेवलप करें. So I'm just going to end my PowerPoint by just highlighting my inspiration. Now, मेरा जो cousin है, उनके दोनों अम्मी अबू डॉक्टर्स हैं, तो वो अपनी लाइफ में काफ़ी अपने काम में मसरूफ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को बड़ा हो गया है और इनको आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी पसंद हैं, तो दे took him to the park, and I just want to show you a video of वो अब कैसे लगता है. और not every child will be the same, not every child will be doing the same things, but it's just to show you कि जितना अगर आप अपने बच्चे को ज़्यादा चीज़ सिखाएंगे, उनकी ज़्यादा स्किल्स होंगी, कम सिखाएंगे कम स्किल्स होंगी. लेकिन ये बच्चे बहुत खुश होते हैं अपनी दुनिया में, एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लेट देम बी द वे दे वांट टू बी. इवन इफ दे 20 years old and they want to do swinging and they want to do activities which you think नहीं बेबीज करते हैं, करने दें, because you want to follow their passion and their interest. So I'm going to take you to my inspiration, which is my cousin Ahmed. I'm going to play a video. This is him. He's now 22 and he's very tall and he looks like this. बहुत से लोग पूछते हैं बच्चा बड़े को कैसे लगता है. So I just put this here to show you a bit of an idea of, it gives you an idea. And then I have another video of him, and he is the reason why I'm sitting here today and doing this talk. So I just wanted to give you an image of, how it looks. But as I said, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा अलग दिखता है. अब देखिए इसको साइड पसंद है, तो you can write, तो ठीक है, let your child enjoy what they enjoy and allow him to explore and develop skills on their own. So these are just 2 videos I wanted to share. मेरे से आज के लिए अब मैं बस और information नहीं share करूंगी. I think now we're going to go down to our Q&A. Yeah. Just to highlight, if you want to contact me privately, मेरा एक Facebook page है, इस्मा Khan-BCBA, जो लेफ्ट साइड पे है. मेरा Instagram पेज है. मैं कराची में हूँ, शाबाज कमर्शियल में, DHA. मैं ज़्यादातर छोटे बच्चों के साथ काम करती हूँ, 2 to 7, 2 to 8, लेकिन मैं कंसल्टेशंस करती हूँ ऑल एजेस के साथ, पेरेंट्स से मिलती हूँ, पेरेंट ट्रेनिंग करती हूँ, और इंशाल्लाह अब रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो मैं ऑनलाइन सेशंस अब शुरू करूँगी. सो प्लीज़ ट्यून इन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच इस्मा. इस्मा, मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा था जब आप कम्युनिकेशन और उस स्किल्स के बारे में बात कर रही थी. आई हैव ऑब्जर्व, मैं बहुत वीडियोस देखती हूँ, कार्बन की भी और जिसकी भी मुझे यूट्यूब पे अच्छी लगती है. मैंने रियलाइज किया है कि वेस्ट में और इवन गल्फ में भी बच्चे बहुत ज्यादा वोकल और वर्बल हैं. पाकिस्तान में बच्चे वोकल भी बहुत कम है, वर्बल भी बहुत कम है. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन कि यहाँ पे अम्मियाँ क्या उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम दे देती हैं या उनको हाउस हेल्प के हवाले कर देती हैं? जैसे आपने कहा कि पेरेंट में से एक का सेक्रीफाइस करना अपने करियर पे जरूरी होता है फॉर सम टाइम. सो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन कि पाकिस्तान में बच्चे बहुत कम, ये तो बेसिक स्किल है ना, बोलना, अपनी बताना, वो नहीं बता पाते. सो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? Good question. The reason that I have understood with time, पाकिस्तान में कम वोकल बच्चे होते हैं बिकॉज पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो है डिनायल. उनको दे डोंट इवन बिलीव कि अपने बच्चे में मसला है. अच्छा, अब जब पता चल गया बच्चा ऑटिस्टिक है, they don't understand what that means. They don't understand what the potential of their child is. They don't see the potential. When they come to me, I take out so many skills from the child, and they're such basic skills of which I observe करते पेरेंट्स से कहते हैं ये कैसे करता है, ये कैसे करता है. I'm like, आपने सिखाया नहीं. छोटी 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 चीजें, ये कैसे बैठ रहा है 5 मिनट के लिए, बैठ रहा है 5 मिनट के लिए. So I think denial. Because of denial, they're not accepting. I have clients educated, very good families. बच्चा moderate to severe है, parents believe वो independent हो जाएगा. हाँ, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये attitude सही हो जाएगा, सही हो जाएगा. अल्लाह के ऊपर, religion के ऊपर डाल देते हैं. It's nothing to do with religion, frankly speaking. The most important thing is therapy. Caretakers पे हवाले कर देते हैं जो nannies होती हैं, because sometimes parents do not compromise on their careers. Therapists are not doing the right interventions. They are not working on the right, they're not speech therapists. Many of them
I'm not saying this in general. Speech therapists have specific skills to teach. They don't do those. They do other skills. There have been so many clients who've been going for speech therapy for 2 years, 3 years, no speech. मेरे पास आए 2 महीने में बात शुरू किया. फर्क क्या था? टेक्निक में. Technique is missing. People don't under and people often don't see the child and their ability and then tweak their teaching accordingly. They think हाँ सबको पैक से स्टार्ट करना है, हाँ सबके साथ एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं. अगर आप अच्छे AKU जाएं और ये बड़े बड़े जगह जाएं, इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं ना, जो मैं पढ़ती हूँ, कॉपी पेस्ट सारे कॉपी Yeah. पेस्ट. आप ये थेरेपी कराएं, ये थेरेपी कराएं, ये थेरेपी कराएं, बच्चे के नाम भी गलत लिख लिया, क्यों कॉपी पेस्ट किया है? They don't individualize plans for children. They don't guide parents along the right direction. So I think Pakistan is very behind in terms of accepting this and Mm. working in this field genuinely and following the right technique. These are the reasons. Yeah, And you are parental right. involvement is not so much. Parents parental involvement is limited. They don't very few mothers are like मैंने सब कुछ अपने लाइफ पे ऑन होल्ड डाल दिया, मेरा बच्चा अब बाहर क्या होता है. और यहाँ के लोग छुपाते हैं बच्चे को. मेरा बच्चा ऐसे करता है, लोग क्या सोचेंगे, बच्चे को घर लग दिया, अब बच्चे को क्यों नहीं बाहर लेके गए, बच्चे को क्यों नहीं सुपरमार्केट लेके गए, टैंट्रम होना है, करने दें, कुछ नहीं होता. Mm. It's your child. If you don't love them and embrace them, who will? No one will. Yeah. You have to bring them out. So ये भी Mm. एक मसला है. And parents get anxious of what people will think. And I think because of that, they just leave them at home. And बाहर मैं सुपरमार्केट्स जाती हूँ, इतने जगहों में ये नजर आते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, बिकॉज दे बिकम पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, विच Yes. यहाँ नहीं होता. ये है. Yeah. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स वेंट टू अमेरिका. उसके पेरेंट्स मुझे बता रहे थे कि हम रेस्टोरेंट गए तो वो जो वेटर था उसने आईपैड ला के दिया उनकी बेटी को, क्योंकि समझ आ गया कि ये स्पेक्ट्रम पे है. सो उसे पता था कि विजुअल लर्नर होगी, तो उसने उसे आईपैड दिया कि वो अपना ऑर्डर खुद करे, और उसने किया. बिल्कुल बिल्कुल. See, they accommodate over here. Simple, basic, even physically disabled individuals. आप मुझे बताएं रैम्स कितनी जगहों पे हैं? नहीं है. पाकिस्तान अकोमोडेट ही नहीं करती इन लोगों को, सैडली. एंड so I think that is also obviously an added thing. But then in the end, you can't rely on the country. You have to rely on yourself as a parent. My Yeah. child, my responsibility. Take ownership and work with your kid. The more, and actually it's really interesting, जो parents अपने बच्चे के साथ काम करते हैं मेरे पास, जो आई केयर में आते हैं, उनकी skills इतनी जल्दी develop होती हैं compared to those who don't work with their kids. नजर आता है. वेरी ट्रू. अलीना, कैन यू प्लीज आस्क क्वेश्चंस नाउ जो हमारे सेक्शन में कमेंट्स में. हाँ, मैं पूछती हूँ. अच्छा, इसके अलावा इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 2 स्किल्स और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनको अक्सर पेरेंट्स लोग ओवरलुक कर जाते हैं. एक तो होती है कि सेफ्टी अवेयरनेस नहीं होती बच्चों को, एडल्ट्स को भी. जो एक पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है वो भी नहीं होता. वो किसी को भी जाके हक कर लेते हैं. माँ ने भी वो गोद का बच्चा बनाया होता है तो उनको लगता है सारे ही शायद इस तरह के, उनको आप हक कर सकते हो, टच कर सकते हो. और सेल्फ एडवोकेसी नहीं होती, बच्चे अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते. जो वर्बल भी होते हैं, दे कैन नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग. फॉर इंस्टेंस, इफ समवन इज कॉलिंग देम, जो वर्ड्स होते हैं जिस तरह के पागल या इस तरह की चीजें, वो उसको भी निगेट नहीं कर सकते कि हम लोग ऑटिस्टिक हैं या हमारे में ये कैपेबिलिटीज है. उनके बारे में भी मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा पेरेंट्स को बताएं कि ये चीज भी आपको इनिशियल स्टेजेस से बच्चे को गाइड करनी चाहिए कि वो अपने लिए थोड़ा सा बात कर सके. ओके, सो जो आपने डिस्क्राइब किया है, वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल यू बैरियर क्या है. अगर आपके बच्चे की कम्युनिकेशन वीक है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, किसी भी तरीके में बहुत कम करते हैं, आप ये चीजें सिखा ही नहीं सकते. बिकॉज टू एक्सप्लेन रेड लाइट, स्टॉप, टू एक्सप्लेन दैट, दोज वर्ड्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. So you first need to develop basic understanding skills. What is it? Label, जो vocal होते हैं. अब बच्चे ज़्यादातर vocal ही नहीं है जो आपने बोला है. So it gets harder. Then you teach them visually. You reinforce them when they walk on the green light, and you stop them when they walk on the red light. They don't have the concept of fight or flight or fear. They will walk in front of that car because they don't know. And to teach that,
most of the time in Pakistan, if you don't develop your child's communication and vocal abilities, you won't even be able to teach that. Bhul jaye. So that's what I'm saying. Start now to develop your child's communication, listener responding, visual skills, language skills, requesting abilities. जब आपका बच्चा हाथ ऐसे करता है और चीजों के पास लेके जाता है, आप ना करें, आप उनसे बुलवाएं, साइन करवाएं, पिक्चर से पॉइंट करवाएं, ये पहले सिखाएं, फिर इस पे आ सकते हैं. अब देखिए ये आगे की बात है. और मैं समझ सकती हूँ ऑडियंस पूछ रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो पूछ रहे भी है ना, उन्होंने अपने बच्चे को बेसिक स्किल्स ज्यादातर सिखाए भी नहीं होंगे. So focus on the basic skills, and then when you've done that, then to teach now self advocacy, standing up for themselves. First, children will learn to stand up for themselves when their parents stand up for them. Number one. Number two, if you want your child to stand up for themselves, you need to teach them the concept that अगर कोई आपको पागल बोले, या अगर अब मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपको कोई ये बोले, अगर आपको कोई ये बोले, they need to understand मैं क्या कह रही हूँ. तो फिर आपने सिखाना है, अगर ये बोलेंगे या ये बोलेंगे तो आपने कहना है, don't say that. तो like you have to teach them. Everything is taught. You have to say अगर बच्चा ये बोलता है तो आपको ये कहना है, अगर बच्चा ये बोलता है तो आपको ये कहना है. That's how you can defend yourself. And in terms of crossing roads and safety, you have to train them and teach them literally by reinforcement. Green light means go, reward them, and red light means stop. Physically, you'll have to work with them. But even to get to those skills, these are very advanced skills. First, focus on the basic skills. Key. एब्सोल्युटली. अच्छा, इसका अनम का भी एक क्वेश्चन था कि हम कब से बच्चे को या कहाँ से प्री वोकेशनल स्किल्स सिखा सकते हैं, तो कोई एक एज लिमिट होती है कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए? No, कोई age limit नहीं होता. I mean, you can obviously start in their teens, frankly speaking. In their teenage years, you can teach them pre-vocational skills. What are vocational skills? Vocational skills are life skills to use and potentially in an employable environment. So if you want to teach your child to do typing, so they can do work somewhere with typing, you can teach them in their teenage years how to type. So there's no set age. But generally, obviously, I would say 11, 12, 13 के बाद, you can use pre-vocational skills. ओके, ठीक है. समर भट्ट का क्वेश्चन है, प्लीज टेल अस what skill sets, trainings and opportunities are there for high functioning autistics in Pakistan? High functioning autistics. So Yeah. देख रहे हैं, high functioning is mild autistic, which means most likely talk, communicate, follow instructions. Absolutely. So that's what high functioning means. So the question was where they can get trainings, and it's gone from here. 1 second. Trainings and what skill sets? Trainings and opportunities. कहाँ पे है मुझे जो? Again, पाकिस्तान में इस तरह की जगहों में नहीं है. आपके घर पे है बस समर. आपको घर से स्टार्ट करना पड़ेगा. इनफैक्ट अगर प्री वोकेशनल स्किल्स की भी हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखो, आपके बच्चे को क्या पसंद है, आप उसमें उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स कर सकते हो. जैसे कि इस्मा ने पहले भी हाईलाइट किया था, अगर उसे ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग्स पसंद है, तो आप घर से शुरू से उसे ट्रेन करो, स्केचिंग सिखाओ, कलर्स करना सिखाएं. ओके, समर का ही एक और क्वेश्चन है. आई वुड लाइक टू टेक दैट. प्लीज गाइड अस हाउ टू मैनेज द रैंडमली trigger cycle of bad thoughts in autistic adults. How to teach my 24-year-old to stop thinking about old bad memories that affect his sleep pattern. Okay. So now when it comes to situations like this, they're more complex. Because now we're going into the mind. We're not doing behavior therapy, which is what I do. Therapy. With this, I would most likely recommend you would need to go see a psychologist or a psychiatrist who deals with individuals of this age with these issues, because they'll have to talk to, the way they do it is often through talk therapy. So they'll talk to your son and ask him, why are you having these thoughts? When you have these bad memories, when you think about these bad memories, what do you feel? Why do you think about them? They'll really need to go into the thinking aspect, which is not in my domain. So I don't want to suggest something that I don't do. So you would now that your child is 24 years old and having these psychological things that are bothering him, you'll need to see a psychologist or a psychiatrist over this. एब्सोल्युटली. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट भी नहीं है,
जो कि हम्म, एडल्ट्स के साथ काम करे। और जब बिल्कुल। हम ऑटिज्म की बात करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि अच्छा इंटरवेंशंस उनको, अगर ऑटिज्म लाइफ लॉन्ग है तो इंटरवेंशंस भी कहीं ना कहीं उनको चाहिए होंगी। तो एडल्टहुड में मेरे ख्याल से ज्यादातर पेरेंट्स को इशू भी इसी वजह से फेस करना पड़ता है कि एक वक्त के बाद आके उनके पास थेरेपी की इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, कहाँ पे वो लेके जाए अपने बच्चों को ना। That's the thing, unfortunately, Pakistan, I mean, I have to say, I don't want to say that हम्म, Pakistan is upcoming in terms of their more BCBAs, हम्म, they're more trained individuals. But हम्म, of course, there is a scarcity, and therefore, that means that agar aapke paas, option nahi hai kahin jaane ka, then you have to work yourself you have to develop as a parent therapist skills and work with your child. So that is definitely something. And of course, consult with professionals. ओके। Core areas. Miss, what are the core areas on which basis we gauge where exactly autism mapped? Okay, so अब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा है तो जो मैं समझ सकी हूँ is what are the areas you look at to identify whether an individual has autism. I'm guessing आप जीशान आपका ये मतलब है, और अगर ये आपका मतलब है तो मैं बोलूँगी the core areas are, like I said earlier on, lack of communication, lack of, could be lack of speech, could be lack of Hmm. conversation skills, could be lack of emotional understanding, could be sensory behaviors, ear covering, hand flapping, tiptoe walking, कोनों से देखना, sensory issues. It could be routine पे Hmm. अटकना, and जब routine तोड़ Hmm. जाती, उनके tantrums are so, they're so out of proportion with what happens, so extreme tantrums. It could be lack of name responding, lack of eye contact, lack of following instructions, developing relationships उनके लिए मुश्किल होता है, वो अकेले रहते हैं, कभी कभार इनके स्लीप इश्यूज होते हैं, इनकी ईटिंग इश्यूज होते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द कोर एरियाज टू लुक एट. ओके। आयशा अहमद का क्वेश्चन है कि मेरा बेटा जो है उनका, वो घर में तो सारी कमांड्स फॉलो करता है लेकिन आई थिंक बाहर जाके न्यू एनवायरनमेंट में वो चेंजेस को अडाप्ट उस तरह से नहीं करता। शी वांट्स टू नो कि अडेप्टेबिलिटी उसके बच्चे में कैसे वो डेवलप कर सकती है। अच्छा, तो ये कहते, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन का ये मतलब है जनरल. You need to teach your child to respond the same way in different settings across different people in different situations. तो इसमें क्या हुआ है कि बच्चे ने सीखा कि घर पे मैं एक तरफ होऊंगा और बाहर जाके एक तरीका होऊंगा, बिकॉज घर जाके अगर मैं कुछ करूंगा तो शायद अम्मी ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगी, और बाहर जाऊंगा तो अम्मी इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, so I'll maybe have more of a behavior, I'm guessing. So you want to run the same protocol you run at home in the social setting too. हम्म, Consistent. If you're not consistent, बच्चा different होगा different settings में. जैसे बच्चे जब हमारे पास हम्म, आते हैं, good. When they go home, they're not as good. Why? Because the parents are not as strict with the kid as we are, which is why consistency is very important. अगर आप घर पे बच्चे को मैनेज कर रहे हैं और आप फिर बच्चे के साथ बाहर जाते हैं, तो आप वही तरीका इस्तेमाल करें. अगर आप बच्चे को घर पे मैनेज कर रहे हैं और आपका मियाँ बच्चे को बाहर लेके जा रहा है, तो आपके मियाँ को आपके तरीके से बच्चे को मैनेज करना होगा कि सब एक तरीके से कंसिस्टेंटली बच्चे को मैनेज करें. इस तरह से फिर बच्चा हर सेटिंग में वैसे ही रहेगा. हम्म, एब्सोल्युटली। ओके, मदीहा का क्वेश्चन है हाउ टू हैंडल puberty इन ऑटिस्टिक बॉयज। Okay, so how to handle puberty in autistic boys? Well, that's a very broad question. There are many ways to handle puberty, but when you say handle puberty, it's puberty is puberty. It happens to every human, right? But to handle it, you want to, number one, I said this before and I think it's important, and I know people don't like to hear it. Teach your son a release. He needs to learn to release. When children, when boys are autistic, they have a lot of hormonal changes. They need to release. I mean, this is scientific, nothing to do with religion or culture or anything. And I believe that if you have a husband around, your husband needs to teach him how to release. That is very important, because honestly when I saw ये बच्चा जो हमारे पास आता था, दो लड़के होते थे लंदन में, उनको जब वो नहीं करते थे तो वो बहुत अग्रेसिव होते थे, और फिर जब रिलीज होता था they used to be much calmer. So that's number one. Number two, if they want their own space, let them have their space. Number three, if they try to release all these energies like outside of the bedroom, teach them ये आप सिर्फ बाथरूम में कर सकते हैं, अपने कमरे में, बाहर नहीं. टीच देम सर्टेन कॉन्टेक्स्ट.
things like that, and that will help them calm. What is puberty in boys? It's physical changes, right, which you can teach them. If they're vocal, you can explain to them about बड़े हो तो आपके ये आएंगे ये आएंगे, पर अगर वो vocal नहीं है तो फिर आपको तस्वीरें से सिखाना पड़ेगा, because वो सुन सकते हैं, वो समझ सकते हैं, even अगर वो बोल नहीं सकते. So you can explain to them in ways depending on how they understand, and these are just some strategies to manage. राइट. अच्छा, इसमें इसके अलावा आई वाज रीडिंग अबाउट इट कि अक्सर इंटरनेशनली जो लोग होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं ऑटिज्म पे या एडीएचडी के साथ, उनके लिए प्लानर्स बनते हैं, ठीक है? लाइक यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो होती नहीं है फ्यूचर के लिए, और उनको आइडिया नहीं है. छोटे बच्चों के लिए विजुअल चार्ट्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो क्या आप कोई ऐसे रिसोर्सेज जानते हो या कोई ऐसे प्लानर्स हैं जो पेरेंट्स डाउनलोड कर सके या यूज़ कर सके घर से, जो कि उनके बच्चे को एडल्टहुड में नेविगेट करने में आसानी हो? उसमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज Honestly, आपके मैंने होंगे? कभी प्लानर्स इस्तेमाल नहीं किए बाहर या हम्म. यहाँ, लेकिन I know they exist. I usually use visual schedules, which I find amazing. And honestly, हम्म. parents को literally online देखना है. Just Google adult planners for Absolutely. autistic children, PDF. You'll get it. ठीक है. Print, laminate it, make it. A lot of it is online. Even for example, visual schedules, how to make them. Go on हम्म. Google, type visual schedule. एक आइडिया मिलेगा. मेरी क्लाइंट होती थी, मैंने उनके साथ बनाया था और वो बच्चे के साथ इस्तेमाल करती थी. फर्स्ट वे डूइंग दिस, देन वे डूइंग दिस, नेक्स्ट वे डूइंग दिस, नाउ वेयर डू यू वांट टू गो, बच्चा सिलेक्ट करता है तस्वीर. व्हाट डू यू वांट टू डू, हम्म. बच्चा सिलेक्ट करता है. व्हाट डू यू वांट टू ईट, बच्चा सिलेक्ट करता है. सो you want to use visual, lot of visual skills. And the planners, हम्म. you want to obviously Google, just type planner PDF, you'll find it online. I don't know specific name or specific brand. I can look into it and then share it with you later. You can forward it on if you want. Okay, sure. Thank you very much. Shahira, do you have any questions? No, I don't have any question. इसमा thank you so much. It was very informative. मैं चुप करके आपकी information absorb करी थी. It was very informative, honestly. I hope कि जो हमारी audience है उनको फायदा हुआ होगा, और definitely they are going to learn something from this webinar. Inshallah. I और hope बहुत सारे क्वेश्चंस आए. जी जी, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन वो छोटे बच्चों से रिलेटेड है. वी आर ट्राइंग कि उन क्वेश्चंस को कैटर किया जाए जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है. तो इफ यू फाइंड एनी टाइम एंड तो प्लीज अगर हो सके यू कैन आंसर देम. और also ठीक है. मैंने कहना था कि अगर if I didn't get a chance to answer your question, if you would like me to answer it in more detail, because कभी कभार questions में बहुत information मुझे चाहिए होगा, फिर मैं आपको जवाब दे सकती हूँ. Absolutely. Just contact me directly on my Instagram page and Facebook page. इसमा Khan-BCBA के नाम से चलता है, and we can set up a consultation. We do online consultations. We can meet in person. I can answer it on email. So feel free to contact me so I can guide you to the best of my ability. And thank you so much to Shahira and Alina for organizing this and highlighting in a very important topic. Thank No you so problem. very Thank much, you for Isma, for volunteering with joining. us, Isma. Yeah, thank you for Thank volunteering you very this. much. Thank you. बहुत कम Since you लोग were इस पे so बात busy. करते हैं और आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया. आई एम श्योर व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द कमेंट्स यू विल गेट टू नो के पेरेंट्स कितना ज्यादा दे आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल एंड ऑल. अच्छा, माही खान है, शी वांट्स टू नो अबाउट सीबीटी. हमारी ये लिस्ट में है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जरूर एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट के साथ फ्यूचर में वेबिनार करेंगे, तो डू वॉच दैट. एंड थैंक यू Please, सो and वेरी if you मच want me इसमा to once discuss again. any other topic anytime, I'll be happy to come on and discuss it. So let me know. और इसमें आप जब Sure, भी thank लाहौर you. विजिट करें तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस. हम आपके साथ एक फिजिकल भी जरूर करेंगे वेबिनार ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह. Actually, शायद लाहौर आऊंगी तो in person I would love to do a workshop over there. बहुत से मेरे रिक्वेस्ट भी आते हैं, अगर आप Absolutely. अरेंज करेंगी सेटअप, मैं आ जाऊंगी. I'll do it. I'll do Inshallah. it. Just stay in touch. जरूर. With that note, I would like to wind up today's webinar. Thank you so much, each one of you who are listening to me. रमजान आ रहा है, सबको रमजान मुबारक, और प्लीज हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा. And I wish a very happy Ramzan. Thank you, Isma, again. May you progress a lot. You are a great human being. With that note, Allah Hafiz, take care of yourself. We shall see you all on some other topic. Allah Hafiz. That is.